Ajay and Parminder ji. उम्मीदों के कारवां अब हुए हैं रवां, उम्मीदों के कारवां अब हुए हैं रवां, उम्मीदों के कारवां अब हुए हैं रवां। झूलिया देख लो अब ये आसमां, International Indian icon, 3i, International Indian icon. आशाओं का काफिला बुलंद हो हौसला, दस्तक दे रही है कोई नई सुबह, सामने है रह गुजर एक नया है आगाज, उम्मीदों के पंख पे हमने ली है परवाह, उम्मीदों के कारवां अब हुए हैं रवां, अब हुए हैं रवां। झूलिया देख लो अब ये आसमां, झूलिया देख लो अब ये आसमां। 3i, International Indian icon, 3i, International Indian icon. Hey, make a mark, make a brand new start. Let's create some history. Let's embark upon a journey to fame. Let it be your name written on the golden stars. You never be the same. Hey. झूलिया देख लो अब ये आसमां, झूलिया देख लो अब ये आसमां। 3i, International Indian icon, 3i, International Indian icon. Yoo-hoo! Ladies and gentlemen, first and foremost, a very, very warm welcome. आभार, अभिनंदन, नमस्कारम. मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ co-host हैं Mr. Parminder Guri. कैसे हैं आप सब? Okay, that's good. So, I wanted to let you guys know first and foremost, ये जो आपने अभी title song सुना, ये has been composed and sung by Parminder Guri, along with Ritu Pathak, who's also a Bollywood singer. Famous Jalebi Bhai song was sung by her. So please, can we have a big round of applause for Parminder? Thank you very much. Very inspiring. The lyrics are written by Soham Majumdar. उम्मीदों के कारवां अब हुए हैं रवां, छू लिया देख लो अब ये आसमां. 3i, International Indian Icon. There you go. All right. So Parminder जी, हम लोग कुछ समय से यहाँ साथ थे, पार्टिसिपेंट सब लोग साथ में. आपका कुछ any feedback about the last जी सर, few days we have spent together? मुझे सोने दो. मुझे सोने दो. जी, ये पिछले शबे फुरकत का जागा हूँ. 4-5 दिन से, वाह वाह क्या बात. शबे फुरकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो. या बिल्कुल सही बात है. तो पिछले 4-5 दिन से हम सबको जो बैक स्टेज काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट पार्टिसिपेंट्स, उनको थोड़ी सी नींद हमसे ज़्यादा मिली है. हम सिर्फ 2 या 1.5 घंटा सोए हैं पिछली रातों में. एनी हाउ, it was a wonderful out of the world experience for me, to be honest. 178 plus around 200 participants, their parents and their friends were here and performing to the best of their abilities, the talent which has never been seen earlier. Thank you 3i for giving the young talent a platform where they can showcase what they have. And Absolutely. thank you our jury members and chief guest Dr. Devender Sandhu and Mayor Amarpreet Dhaliwal for flying all the way from California. We appreciate your commitment to promote art and culture. Absolutely. If I were to take away 3 points, right, from the event, I think the point number 1 was
we all got together as a family. It was like an extended family. All the participants, their Absolutely. family, the 3i team all got together. So that was point number one. Absolutely. Point number two was, I think it was all about the energy which it brought across with the guidance which all the judges and a grandmaster provided to the audience and to the participants, so that they can take away some key nuggets from here. And third and foremost, I think the biggest thing was, you don't get an opportunity like a 3i International Indian Icon kind of a platform where you get the talents all across the globe, and you're given an opportunity not only to perform in different categories like singing and dancing, but if you got a talent in any category, you can come and showcase that. So guys, can we have a big round of applause? So परमिंदर जी, मेरा ख्याल है हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जी, और जरूर। हमारे साथ में जब इतने दिग्गज कलाकार लोग हैं तो क्यों ना उनको बुला के कोई परफॉर्मेंस करी जाए. Zarur, I have mentored one team of young kids. So we- before that, Parminder, I think what we're going to do is we're going to invite the hot superstar. Oh, yes, 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 And yes, yes. That'll be an ladies and appropriate gentlemen, can you please put your hands together for Rahul Jatin? thing. Wonderful. It's yours, Rahul. Thank you, guys. This song is the. If a guy genuinely falls in love with a girl at some point in his life, he should sing this song for her. And it's composed by none other than our Jatin sir here. So I hope you guys like it. ये फिल्म यस बॉस का गाना है. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, शाहरुख सर पे फिल्माया गया था. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो. ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं. अगर तुम कहो अगर तुम कहो. अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां. सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां. क्या मैं करूं हाँ तुमसे बयां. हाँ क्या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ. कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं. अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. अगर तुम कहो. ये अगला गाना जो है ये सभी को पसंद है, अरिजीत सिंह का गाया हुआ है. तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे. हम टी शर्मा की दुल्हन का है.
हम एक और गाना गाने वाले हैं शायद, ठीक है? ये भी यस बॉस का ही है। जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। हाँ मान जाए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। थैंक यू गाइस। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ही ख्वाब है, इतना सा ही ख्वाब है। गाइस, वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राहुल जतिन। International Indian icon. Okay, friends, we're going to move one step ahead, and just to give you a glimpse of what we have in store in our mind. So we're going to bring a few groups on stage one by one. So with this, can you please put your hands together for the first singing group and with its mentor, Parminder. ये देश हमारा जय हिंद, बोले जग सारा जय हिंद। हम भारतवासी जय हिंद, हम भारतवासी दुनिया को दिखलाना है आज। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। Thank you very much. Ladies and gentlemen, can you please put your hands together for this singing group? S3. पे सवाल रखना, दिल के संदूकों में मेरा अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया।
We are back on track. Yes, we All are. right, Parminder. So, what do we have next on the cards? I got talent. Absolutely. और इसको award देने के लिए, we are going to recognize the winners for that. We are going to invite a couple of dignitaries on the stage. Sure. All right, so may we request Nimish Jani, the trustee for Schaumburg, to please join us on stage. And may we have the honor of Mr. Krishna Bansal, candidate for Congress for District 11. Please be on the stage with us. All the participants for I Got Talent, I hope you guys are ready because we're going to be announcing the names of the winners. We'll start with the juniors category and we'll start with the Judges' Choice Award. And the award goes to Advik Madhugar. The next award in juniors is also on acting. And the award goes to Suhani Manoj. I can tell you this kid has really lots and lots of talents. Acting, dancing, you name it. Juniors category, second runners up. Padma Shri Malade. Awesome job, Padma Shri. Okay, the first runners up in juniors category. Srushti Gube. Thank you. And the winner in the juniors category for I Got Talent, Benjamin Korean. For the next series of award, may we request Tom Daly, Mayor of Schaumburg, please join us on stage. Okay, the seniors category for I Got Talent. We're going to start with the judge's choice. Mahir Kota. Mahir, awesome job. Best acting for senior goes to Louis Joseph. Second runner-up, seniors category, Sunir Mahmood. Sunir, congrats, buddy. First runners-up, Sanika Kubde. And the winner's name is Rakshita Ravi. And brilliant. May we request the dignitaries please take their seats. Thank you. Ladies and gentlemen, can you please put it up for the entire team who was here on stage. Now we have a group performance, Bollywood Thunder from Florida. Sunny Florida.
can you tell us the name of the group and a little bit about how you got together and why did you pick up this song for performance? Sure, thank you so much. My name is Aparna Chakravarti. I'm one of the singing jury judges, but I'm honored to be here doing a dance. This is my wonderful team, Bollywood Thunder. She's my daughter, Trisha Chakravarti. This dance goes back, well, this team actually goes back, I want to say 14 years now. So we have always been together, danced together, have been the best of friends, and you'll see a lot of mothers and daughters in this team. So it's not only just a dance team, but it's really a family. So we're very blessed to be here. Thank you, Sharanji, for giving us this opportunity. And thank you, audience. Ajay, Thank you. can I ask one question? Ma'am, this is a beautiful prop. आपने इनको खड़ा क्यों किया, इनसे नचवाया क्यों नहीं? Actually, I do have boys who dance here along with their moms, but this time one of the boys got sick. Suparna's son Yash was supposed to be here, so we had to change the routine up a little bit because it was a medical emergency. Otherwise, they do dance and they're fabulous. So a big hand to our boys here. They're two brothers, Ashwin and Lakshay, of my good friend Reena Goel, who couldn't be here, but she has her boys, and I think their dad is here in the audience. So I'm sorry, I'm so out of breath. Thank you very much. Really, really appreciate that. Was a grand year. Absolutely.